Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Near Peer. Today we're going to discuss about political parties, their historical evolution and their functions. Political parties in the broader sense basically एक organized group है जो कि political power हासिल करने के लिए struggle करता है और eventually political power acquire करता है. ये they do come in forward and not just contest elections, but they do things which are related in how they influence political power as well. Because it's likely कि कोई political power party जो है वो elections ना जीते, लेकिन still continue to influence political power. So their relations with political power is permanent in that sense. Now let's talk about evolution of political parties historically. और इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन भी आ चुका है पास पेपर्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो जो एंशिएंट ग्रीक डेमोक्रेसी थी, जो कि वाज द प्रोजेनिटर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी, they didn't have any organized political parties for the very reason that Greeks generally tended to be direct democracy. तो political parties की अमूमी तौर पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. Political parties are more important in indirect democracies क्योंकि indirect democracies में representatives की ज़रूरत होती है क्योंकि it's a representative democracy. Again, if we move forward in time, in the Roman Senate, there used to be two groups, the patricians and the plebeians. Patricians used to represent the noble families, the wealthy classes, is those who had traditionally had the power. The nobility was represented by the patricians. The plebeians represented the wealthy merchants and the middle class. तो जो एक middle class या एक striving working middle class थी और merchants थे, traders थे, उनको represent करते थे plebeians. तो ये दो broad, यानी आप कह सकते हैं कि earlier forms of political parties उन्हें कहा जा सकता है informally because वो दो different interest groups को represent करते थे. But since the fall of the Roman Empire, they came under the clergy, the church, and then the authority of the kings. The people of Europe did not have any real meaningful voice in the political affairs, and political parties were virtually absent. The Popish plot in England was very formative and was a watershed moment in that regard. 1768 में एक अफवाह फैली बर्तानिया के अंदर कि किंग चार्ल्स II को डिपोर्ट करके को डिथ्रोन करने की साजिश कर रहे हैं. फॉर कॉन्टेक्स्ट, इंग्लैंड इज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री एंड द पॉपुलर रूमर वाज कि जो इंग्लैंड के अंदर जो माइनॉरिटी रोमन कैथलिक्स की है, वो रोमन कैथलिक्स किंग चार्ल्स II को डिथ्रोन करके जो किंग चार्ल्स का भाई है जेम्स, हु वाज द ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो कि रोमन कैथलिक है, उसको इंस्टीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इन एक्चुअलिटी देयर वाज नो रियल पोपिश प्लॉट, बट पार्लियामेंट इस चीज़ से काफ़ी अलार्म हो गई और पार्लियामेंट इसको सही समझने लगी. और पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने कानून पास करना शुरू कर दिया कि कोई भी रोमन कैथलिक जो है वो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता और ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकता थ्रोन को. बट this attempt by the parliament was seen by king as infringing upon that king's right, और king ने इसको इस तरीके से देखा कि parliament is trying to control my right on my inheritance. तो कंट्रोल ने इस कंट्रोल की और इस इन्फ्रिंजमेंट की रिस्पॉन्स में किंग ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया. और पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई तो पूरे इंग्लैंड में इस पूरे इशू के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया. पीपल वर आइदर for king's decision or they were against king's decision. Those who decided, those who favored calling for a new parliament were called petitioners. कि इन्होंने petition basically कि नई parliament को call करना चाहिए. वो लोग जो king के decision से agree नहीं करते थे, they were called the abhorrers by virtue of the fact that they abhorred any attempt to control king's actions. So they were for the king. Petitioners were later called Whigs and the supporters of the king were called the Tories. I have given the brief history of the names as well. Whigs एक पुराना नाम था Scottish Presbyterians के, उन लोगों के जो गवर्नमेंट को अपोज करते थे. Tories were basically an originally name जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के जो रोमन कैथलिक्स थे, आयरलैंड के रोमन कैथलिक्स जो थे, जो कि प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड के रूल के अंडर सफ़र किए थे, उनको टोरीज कहा जाता था. बहरहाल इन नामों ने पटिशनर्स जो कि
were in favor of parliament, and Tories who were in favor of, they were called Whigs, and Tories who were in favor of the king. This eventually took on new meaning. The basic difference between them in the 1600s was on the view that what government should and shouldn't do. आहिस्ता आहिस्ता ये institutionalize होते गए इस issue से. Beyond that issue, इनकी अपनी ideologies बनती गई. Tories became the group that wanted a rule by a strong king, and Whigs wanted ordinary people to have more right and more say in that government. So in time, जैसे जैसे parliament की कंट्रोल बढ़ता गया और किंग का इन्फ्लुएंस कम होता गया बरतानिया के अंदर, तो विग्स और टोरीज डेवलप इनटू ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, विद विग्स known as they were the liberals and Tories were the conservatives. Even आज भी आपके जो लेबर कंजर्वेटिव पार्टी है उसको भी अक्सर कैजुअली टोरीज कह के बुलाया जाता है और जो लिबरल्स हैं उनको विग्स कहा जाता है. सिमिलरली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ये चीज़ फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट टसल की शक्ल में नजर आई. जब अमेरिका नया नया बना तो उसके अंदर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी. इवन जॉर्ज वॉशिंगटन abhorred the idea of having political parties that divides people into factions and sections, and national interest becomes less important. But eventually due to some reasons वो political parties दो ग्रुप्स बन गए और वो पहली दफ़ा वो ग्रुप्स फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में नजर आए. फेडरलिस्ट फाउंडिंग फादर्स में से और पॉलिटिशियन क्लास में से वो लोग थे जो बिलीव करते थे कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट के राइट्स ज़्यादा हों, स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट्स कम हों. तो ये सारे थे. जबकि एंटी फेडरलिस्ट वो लोग थे जो कहते थे कि एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से. और वो ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाने की बजाय जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले अमेरिका में चल रहे थे वही बनने चाहिए. बहरहाल ऑन दीज टू इशूज़ एंड टू लाइन्स दे डिवाइडेड देमसेल्व्स. पहले हमें जॉन एडम्स की शक्ल में फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट नज़र आता है, उसके बाद जॉन थॉमस जेफरसन की शक्ल में हमें बाद में एंटी फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट नज़र आता है. सो खैर दिस इज़ हाउ बेसिकली पोलिटिकल पार्टीज इवॉल्व्ड in North America and in continental Europe, and because European countries had colonized much of the world as well, तो उनका political institutions या उनका political models were inherited by the African countries, by the Asian countries as well, and since decolonization वो political parties का culture इन ममालिक में भी आ गया है. Now coming to the roles of functions of political parties. Political parties बहुत मुख्तलिफ किस्म के functions perform करती हैं. उनमें सबसे पहला is the nomination function, जिसके अंदर वो मल्टीपल पब्लिक ऑफिसेस के लिए कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं. इसके अंदर आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर सबसे पहले तो वो करती हैं, जिसके अंदर आपके मेयर्स हैं, नाजिम्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, आपकी यूनियन काउंसिल्स हैं. सेकंड पे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर वो नॉमिनेट करती हैं for chief ministers, for chief executive at the province or different provincial ministries, and then at the federal government. और दुनिया भर में इसी तरह मुख्तलिफ पब्लिक ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं, उन सब के लिए ये नॉमिनेट करती हैं. The second is informer stimulated function. This means that they help inform the public or they help stimulate certain issues or certain information in the society. वो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो लोगों को पोलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो पोलिटिकल इंक्लूड करते हैं लोगों को, और ये सारा फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करते हैं. हैंस एज यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर दैट आई सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैज एन एजुकेटिव वैल्यू. वो लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स. द थर्ड इज द बॉन्डिंग एजेंट फंक्शन, व्हिच मीन्स दैट दे help ensure the good governance, the good performance of its candidates और its office holders को. वो regulate करते हैं अपने internal affairs को ताकि एक अच्छी performance candidates की और office holders की हो सके. Fourth is the government function, which is the obvious function कि वो चूँकि government formulate करने वाली party भी एक सियासी जमात होती है, so they perform all the functions of a government. ऑफिस होल्डर्स को वो रेगुलेट करते हैं अपने इंटरनल अफेयर्स को ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स की और ऑफिस होल्डर्स की हो सके. फोर्थ इज द गवर्नमेंट फंक्शन, विच इज़ द ऑब्वियस फंक्शन कि वो चूँकि गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करने वाली पार्टी भी एक सियासी जमात होती है, सो दे
परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ आप ऑपोजिशन फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि कोई ना कोई जमातें मिलकर मुश्तरका तौर पे ऑपोजिशन में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो वो ऑपोजिशन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। द फिफ्थ इज़ अ वॉच डॉग फंक्शन, इट्स कुड ऑल्सो बी लाइक अकाउंटेबिलिटी फंक्शन, जिसके अंदर ऑपोजिशन की जमातें या छोटी जमातें जो अपोजिशन में नहीं है या जो पार्लियामेंट तक भी नहीं पहुंच सकी, उनकी एक खास स्ट्रेट पावर होती है थोड़ी बहुत, तो वो इस तरीके से नज़र रखती हैं और वो क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट के ऊपर। सो दे कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। सो दीज आर द मल्टीपल इशूज अराउंड विच पोलिटिकल पार्टीज एडवोकेट, और तो ये मल्टीपल फंक्शंस आपके सामने आ रहे हैं पोलिटिकल पार्टीज के। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और पॉलिटिकल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।